गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। Solutions have different properties than either the solutes or the solvent used to make the solution. These properties can be divided into two categories: colligative properties and non-colligative properties. Now we come to colligative properties. Colligative properties depend only on the number of dissolved particles, that is molecules, ions or atoms, whether they may be small or large, in solution and not on their identity. Or we can say the colligative properties are those properties which depends upon the number of particles present in unit volume of the solution. They does not depend upon the nature of solute, that is its chemical structure. These colligative properties are of four types. चार प्रकार की होती हैं: osmotic pressure, vapor pressure lowering, boiling point elevation and freezing point depression. First of all, we come to osmotic pressure. Osmotic pressure, before studying the osmotic pressure, we have to see the difference between diffusion and osmosis. Diffusion in liquids. Substance tend to move or diffuse from regions of higher concentration to the regions of lower concentration, so the difference in concentration disappear. Or the movement of solute particles from higher concentration towards relatively lower concentration is defined as diffusion. By placing water is solvent, on concentrated aqueous salt solution, तो क्या होगा? Salt moves into water layer and water move into the salt solution till the new solution becomes uniform. That is, till the concentration of both the solution becomes uniform. See, this is the molecules. They are moving from where the concentration is high towards that where the concentration is low. जहाँ अधिक सांद्रता है वहाँ से ये कम सांद्रता की ओर मूव कर रहे हैं. दिस इज डिफ्यूजन, विसरण. अब डिफ्यूजन का हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. अगर हमने रूम में एक स्प्रे सेंट की बोतल ओपन की तो थोड़ी देर में क्या है कि जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है वहाँ सेंट पार्टिकल्स पहुँच जाते हैं. तो दे माइग्रेट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. दिस इज डिफ्यूजन. नाउ वी कम टू ऑस्मोसिस. On separating concentration solution from water by semi-permeable membrane. What is a semi-permeable membrane? The membrane which allow passage of solvent molecules and prevent solute is called semi-permeable membrane. Water will diffuse from solution of low solute concentration to solution of higher solute concentration. This is known as osmosis. The diffusion of solvent through semi-permeable membrane is called, the diffusion of solvent through semi-permeable membrane is called osmosis. Or we can say the movement of solvent particles from lower to relatively higher concentrated solution when both the solutions are separated by semi-permeable membrane is defined as osmosis. देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट है.
तो राइट हैंड साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में लिक्विड लेवल राइज करेगा. दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सी दिस here we have a two solutions separated by a semi-permeable membrane. The solution of right hand side is more concentrated than the solution of left hand side. So the solvent particles move from left to right, and the water level in right side increases up to the height h. This is known as hydrostatic pressure. P is equal to rho gh, where P is the atmospheric pressure, rho is the density of the solution, g is the gravitational force, and h is the height. We see लेफ्ट हैंड साइड में लेवल डाउन हो जाएगा ट्यूब में लिक्विड का, और राइट हैंड साइड में इंक्रीज कर जाएगा. तो ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द P इज इक्वल टू रो जी एच. द सॉल्वेंट मूव्ड इनटू द ट्यूब and the height of the solution will rise till the hydrostatic pressure exerted by the column of the solution becomes equal to the atmospheric pressure. Hydrostatic pressure कितना हुआ right hand side में? Rho gh, and when it becomes equal to the osmotic pressure P, then the process of osmosis stops. Now we can say that osmotic pressure is a pressure, is a minimum external pressure which is required to stop the process of osmosis at room temperature. Now we come to osmotic pressure of non-electrolytes. Non-ionized. Non-electrolytes are which cannot be divided and dissociated into ions. Osmotic pressure is directly proportional to concentration. If we double the concentration, osmotic pressure will be doubled. Twice concentration, twice osmotic pressure. Why? Because osmotic pressure is directly proportional to the number of molecules. अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, देन देयर मोलर कंसंट्रेशन आर आइडेंटिकल. तो उनके मोलर कंसंट्रेशन से वो बराबर होंगे, आइडेंटिकल होंगे. सी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन कंटेन्स 34.2 ग्राम सुक्रोज. सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट 342 in 100 grams water, has the same osmotic pressure as dextrose, which contain 18 gram. of water. देखिए मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180. 180 और कंसंट्रेशन क्या है? 18 ग्राम पर लीटर. तो सुक्रोज के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 34.2 डिवाइडेड बाई 342.1 मोल है. और डेक्सट्रोज के कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट 18 डिवाइडेड बाई
सॉरी वेट 18 डिवाइडेड बाई 180, तो ये भी कितना आएगा 0.1 मोलर। यानी ये दोनों सॉल्यूशंस ऑस्मोटिक प्रेशर में आइडेंटिकल हैं, यानी इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर होंगे। नाउ वी कम टू 1/2 equation. 1/2 proposed that the dilute solution behaves like a gas. So, like the gas, they obey all the gaseous law. 1/2 stated that there is a proportionality between osmotic pressure and concentration and absolute temperature only for dilute solution. तो P is proportional to C and P is proportional to T. या हम कह सकते हैं osmotic pressure is represented by pi. So pi osmotic pressure is proportional to concentration. Osmotic pressure is proportional to temperature, or pi is equal to RCT. This equation is analogous to ideal gas equation PV is equal to nRT. It's for 1 mole, and if it's multiplied by number of moles, so it is identical, analog to the equation PV is equal to nRT. अब देखिए पाई V is equal to nRT. Pi is osmotic pressure, T absolute temperature, N number of moles, V volume in liter, M molarity. C is the concentration, molarity, N upon V, or M is the molality, N upon weight. तो N को V को हम इधर ले आएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, पाई इज इक्वल टू N अपॉन वी आर टी. N अपॉन वी क्या हो गया C, पाई इज इक्वल टू सी आर टी अगर कंसनट्रेशन मोलैरिटी में, और अगर कंसनट्रेशन मोलैलिटी में है तो पाई इज इक्वल टू एम आर टी. So this is about the one colligative property, osmotic pressure. On the next class, we see how this osmotic pressure is measured and how it is useful in determining the molecular weight. So, thank you.